Okay, so good afternoon to all of you. So this is the second session of, is it I'm audible? This is second session of Baraita group. In the last session, we have seen the some common features in the Baraita group, right? How we identify the Baraita as a remedy, because it is quite neglected remedy. We have seen, or we already discussed, I had discussed this key. We have even me as a physician practitioners, we have some fixed notation or fixed uh, pictures of some remedies. Then we have seen that remedy in that angle or in the that features जो है मतलब अगर वो फीचर्स हमको दिखते हैं तो हम उसे फिर सोचते हैं कि हाँ ये बराइटा है। तो उसमें जो फीचर्स होते हैं वो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर हम देखते हैं कि डॉर्फिश mental retarded child. Mostly we have seen the Baraita in child. But when you study the detail through the miasmatic cleavage or through the understanding of Dr. Praful Vijayakar sir, you can see the Baraita we can give in every age of the life, or even not only in the dwarfish mentally retarded child, but even the person who are ranking topmost in a good in a top level, if the symptoms agree. This is very important. Even I have given you the few examples that how the sir prescribed the Baraita carb or Baraita remedy for the person who was a Lions Club president, right? So it is the it is always one must be have the broad mind when we think of Matra Medica, right? So when we study like this, we can able to pick up the remedy or group or the person in that की पर्टिकुलर हो ये बराइटा ग्रुप में आता है ये नाइट्रम ग्रुप में आ सकता है ये लाइक दैट बट व्हेन वी नो द कॉमन फीचर्स ऑफ बराइटा ग्रुप और एनी ग्रुप common features, right, which is we already studied, then we can able to differentiate it through the शेड्स उसके भी एलिमेंट जो होते हैं जैसे बराइटा कार्ब अगर देखेंगे तो बराइटा ग्रुप अगर देखेंगे तो बराइटा कार्ब आएगा बराइटा म्यूर आएगा बराइटा फॉस आएगा बराइटा आयोड आएगा बराइटा सल्फ आएगा और इवन द बराइटा एसिटिकम आएगा और बराइटा आर्स आएगा, राइट? Now how we differentiate then and at what basis we can differentiate all these elements of Baraita group, that we have to study now in this session, right? I think who was absent in the last session was gone through the recording of the last session. If you because then only you can understand the different remedies or the elements of the Baraita group, right? So the entry point for the Baraitas, right? Especially even the all the symptoms which are present in the Baraita carb represent the whole Baraita group. And then we can differentiate the phos, sulf, iod, ars on the little differentiating point. Because this is again important if the person or the patient is belongs to a Baraita phos or Baraita iod, and if you prescribe the Baraita carb, then it is possible that the remedy acted partially because it is not exactly a similimum but near to similimum. That's why we have to understand very
closely and clearly how these elements get differentiated and from which points we can differentiate these remedies, right? So that we can accurately prescribe, so that we can accurately prescribe the remedy, right? What are the entry points for the Baraita groups are the physically, if you see the Baraita physically, right? Then you can see when we see the people who have not grown up to a normal height and to a normal stature, because we have already seen short stature people or short stature person might be the, so these people, when you see such a kind of people, then think of Baraita as a group. Those who bald early baldness is the one of the important feature in the Baraita group. Rounded feature, knobby nose, large nose, not a pointed, not a psoric nose. It is a psychotic nose. Occasionally a mixture of rounded and squarish face, right? The Baraitas all, most of the time is the all Baraitas are thirsty. Most of the Baraitas are chilly. Some Baraitas are hot, like Baraita Sulf, Baraita Mur. But chili, Baraita Car, Baraita Foss, Baraita Ars, all are the chili remedy. Most of the Baraitas are right sided, except the if you see the Baraita Sulf is the left sided, Baraita Mur could be left or right side, right? Now, mentally, what could be the entry points for the Baraita group? Mentally, when we see the highly timid, it is not just a timid, highly timid, extremely bashful person or children, because it is not only it is indicated in the children throughout the age. Even in the old age, you can prescribe the Baraita if the symptoms are similar. Grown up who come with the parents or spouse who does more of the talking because they are not confident. The grown up people, the child or the person who is the 27 years, 28 years, 30 years, who is still unmarried or even married, comes with his or mother. And every time when you ask to the person, every time you ask to the that patient, he or she looking towards the mother or father who is coming with him or her. This is the picture of dependency and the lack of confidence that person having. So most of the time if you observe that the children में ऐसा हो सकता है who are the timid children, right? So there are the lot of remedies we have which having the timidity, बराबर है? But the grown up person, even the married person who having the reach to 40 years of age, 50 years of age, when you ask him any questions regarding the case taking, he looking towards his wife, he looking towards his mother, his father. So you can observe the so much of dependency and lack of confidence while narrating to the strangers. So there is always a fear of strangers in the back of the mind. There is always a severe fear of the stranger. You can see in the Baraita person or Baraita personality. The Baraita who talk too much or show overconfident, but it looks like a foolish behavior. मतलब they show their overconfidence behavior, but that behavior you stamp it as a this is the foolish behavior. It is not an intellectual behavior. That means there is a lack of intellectual capacity in the Baraita that cause it the behavior, though it is overconfident, become foolish behavior, right? People who do not understand the physician question at once stroke and give thoroughly confused or wrong answer. They you can observe that some people's ask the question or like wants the question to be repeated by the physician or consultant doctors.
कि क्या हुआ, मतलब एक बार हम जब क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको समझता नहीं, इट बिकम कंफ्यूज, तो कंफ्यूजनल स्टेट, इजीली गेट इनटू कंफ्यूज, सो वी हैव टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन. एंड समटाइम्स वी हैव सीन दैट इवन व्हेन द पेशेंट को हम मेडिसिन समझाते हैं, उस समय भी काफी हम ऑब्जर्व कर, अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो जब हम पेशेंट को मेडिसिन समझाते हैं, है ना, सी द डिफरेंस in receiving whatever we are explaining. Some people's, okay, एक बार समझा समझ गया, लिखा है देखा है पढ़ा है समझ गया. अब कोई पर्सन ऐसे रहते हैं कि हमको एक बार बताना पड़ता है, दो बार समझाने के बाद भी फिर रिसेप्शनिस्ट को पूछेगा कि ये समझा के बताइए कैसे, मैं कंफ्यूज हो गया. कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि जैसे हम बोलते हैं वो लिख लेते हैं, नहीं आपने समझा है पर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, मुझे याद नहीं रहेगा, लिख लेता हूँ. So these are the variations. If you observe this variation, you can match. This is after you prescribe the remedy, but you can compare it. कि whatever the medicine you prescribe is right or wrong on the basis of this behavioral pattern. Right? Again, this shows the intellectual capacity, the memory, and active mind, right? Confidence, all these phenomena. When any amount of instruction or explanation the physician give is a waste. मतलब वो ऐसा होता है कि बार बार समझाने के बाद भी उसे समझ में नहीं आता है. Patient who repeat the same mistake again and again, the person who doing the same mistake, this is not because of the mischievousness, it is because of the foolishness, it is because of the lack of intellectual development, it is because of the poor memory. He can't memorize that thing, that's why ask again and again, and or doing the mistake, same mistake again and again, right? People who do not understand the importance of important thing, the priority हमने बोला है ना कि जो प्रायोरिटी होती है उसको प्रायर न समझ के कुछ और कोई इंपॉर्टेंस देते हैं. आई हैव इवन गिवन द एम्पल ऑफ एग्जांपल इन द लास्ट सेशन कि ऐसे भी होता है कि पेशेंट को कैंसर डिटेक्ट हो गया और पेशेंट ये बोल रहा है कि डॉक्टर साहब ये स्किन, डॉक्टर साहब ये मेरे स्किन क्यों ऐसे शालो दिख रही है, ये पिंपल्स क्यों आ रहे हैं. द पर्सन who suffered with the cancer asking to the doctor ki just pay attention towards my pimples and first give the medicine for this. That means displace intellect, displace priority. उनको ये नहीं समझ रहा है कि हमको कैंसर है which is very dangerous for life, पर what they do, they give importance to the less or least important thing. This is very important. This is the observational symptoms. You can keep, if you are alert, the physicians are alert, then they can observe such a kind of behavior of the patient and then he or she pick up the remedy easily. एंड ये कब होगा, जब हमको हमारे माइंड में ऑलरेडी हमको पता होगा कि ये बराइटा ऐसे बिहेव करता है ना. अनलेस एंड अनटिल हमारे माइंड में ये रहेगा ही नहीं बराटा कैसा है, ये समझेगा ही नहीं उसके शेड्स कैसे होते हैं, किस तरह का बिहेवियर, तो हम उसको पिकअप नहीं कर पाएंगे. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मेडिसिन को समझना. पीपल हु आर इनअटेंटिव अनऑब्जर्वेंट विद वीक मेमोरी, द पीपल्स हु हैविंग द फिक्स जॉब फॉर अ ईयर, मतलब 30 साल से काम कर रहा है, रिटायरमेंट भी हो गया, अगर आप देखेंगे कि जो जॉब या पोजीशन पे वो लगा था, 27 साल हो गए, 20 साल हो गए, वही पोजीशन पे वो काम कर रहा है, काम अच्छा है. सी, काम में गड़बड़ी नहीं है. अगर आप उसके बॉस को पूछेंगे ये बंदा कैसा काम करता है, तो जो पता है वो करता है और जो उसका काम है वो अच्छे से करता है. वे ये पूछेंगे अगर इसको अपग्रेड किए नया काम बताए तो फिर कंफ्यूज हो जाता है. तो काम सही करेगा, they doing the work conscientiously,
perfectly, but the same at the same level, and don't want to be upgrade or don't want to be अनरूटीन नहीं चाहिए. जो रूटीन है, जो ऑलरेडी रूटीन इस्टेब्लिश हुआ है, वही काम चाहिए. तो सही से करेगा. अगर आपने नया काम दे दिए तो एडेप्टेशन इसमें काफी डिफिकल्ट होता है बराटास ग्रुप के लिए. देयर इज अ एडेप्टेशन इज ऑलवेज डिफिकल्ट. So people who are fixed in their routine and do not have the adaptability to change, these are the baratas group. People who do not use the modern gadget, already explained, do not have the creativity, people who have everything misplaced. We have all in the last session we explained, and I think you understood this term misplaced, because this is the core of the barata group. Misplaced understanding, misplaced attachment, misplaced love, affection, action, opinion, behavior, all things are misplaced. Slowness of everything, it is the hallmark in the barata. Slowness. Because if the person is active and alert, if the person is active and alert, then rule out. But certain medicine is there where there could be some activeness, restlessness will be there, like a Barata phos and Barata iode. When the iodine element is added in the Barata, then iodine becomes predominant in the form of restlessness and activeness. So when you have the picture of Barata, as with this there is a restlessness and some amount of activeness, then try to evaluate the appetite. How is the appetite of the patient, and he or she doesn't tolerate the hunger. Hunger intolerance, appetite ravenous है, hunger intolerance है, hasty speech है, hasty talking है, या hasty eating है, then think of Barata iode, not a Barata carb. This is the differentiating point. This is a differentiating point. We have all, I have explained in the last session कि जो age भी होता है, misplaced age होता है, कि अगर 50 की लेडी है, 60 की लेडी है, but she looks like a 30. She looks charming, she looks beautiful like a 30, 25. Then think of अभी 2 दिन पहले एक पेशेंट आई who having the severe, she having the severe menorrhagia, prolonged, profuse menses with large amount of clots, large size से large और clotted, profuse and clotted bleeding, menstrual bleeding. Right now, she on the basis of that look or bolo age, misplace, we can think of the Barata. But again, very important, whether the other symptoms, activeness, memory, intellect, morals, slowness, ये सब मैच हो रहा है क्या, that we have to be seen. अगर वो मैच नहीं हो रहा है तो don't think of just Barata on the basis of this. So if there is a misplace and you get the slowness, you get the confusion, you get the indecisiveness, you get the severe timidity, then there must be a Barata. हो सकती है, मतलब होंगी, या definitely there is a Barata group. And if you see the hemorrhage, then think of the hemorrhagic remedy. कौन सी Barata group, Barata element अगर देखेंगे तो phosphorus, ये hemorrhagic element आएंगे उसमें, hemorrhagic conditions ज्यादा आती है, बराबर है. तो वी कैन थिंक ऑफ Barata phos, बट अगेन ये टोटलिटी मैच होना चाहिए, राइट. सो what could be the other hemorrhagic remedy that has the tendency to form the clot easily? मतलब सी है ना, मेंस्ट्रुअल है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होना चाहिए, फ्लूइड होना चाहिए ना, क्लॉट्स भी थोड़े थोड़े होना चाहिए अगर रिटेन होता है फ्लो. तो यहाँ पे फ्लो प्रोफ्यूज विद लार्ज अमाउंट ऑफ clots. So I rule out the Barata and prescribe other remedy on the basis of some other syphilitic symptoms, right? So there is a slowness is the hallmark in the Barata group. Now slow development, slow growth, that's why called as a retarded
child or retarded person, slow in understanding and even slow in the reaction. This slowness is, you can see everywhere in the Baraita, whether it is a physical or it is a mental. So slowness in the understanding. So when you ask question, the reply doesn't, you expect the quickly, the reply सोचेंगे फिर आंसर करेंगे. हो सकता है कि फिर से पूछेंगे कि क्या बताया डॉक्टर साहब, फिर से बताइए, मैं समझा नहीं. So this kind of observation you take into the consideration while prescribing or while considering the remedy. Slow, even the disease progress is slow. This is again important. Pace of the disease, progress of the disease. You can see in the Baratas, the disease progress is also slow, indolent. Even you can get the non-healing ulcer, which is the indolent ulcer in the Barata group. So that's why the most of the Baratas are psychotic. Some having the syphilitic taint like a Barata iode. तो क्या होता है हम इंडिविजुअली देखेंगे, right? So we can now study the Baraita Gar, Phos, Mur, Sulf, and Iode, right? So consider the Baraita carb as the most important remedy. How you pick up the Baraita carb? If you see the Baraita carb, the trio of the Baraita carb, this is very easy to memorize. That's why I have drawn the triangle. So you can see the Baraita as a short stature, Baraita carb. Now consider it as a Baraita carb. Short stature, receding hairline, rounded face, psychotic face, and knobby nose. That is also psychotic. Because most of the Baraitas are the psychotic in background, right? The Baraita carb is chilly, thirsty, and always a right-sided. So whatever the affection the patient having, even the tonsils, because the Baraita also having the recurrent tonsillitis. आप देखेंगे कि the person who having or the child who having the recurrent tonsillitis or made that tonsils leads to the abscess formation, recurrent tonsillitis. That's psoric tonsillitis. Now this psoric tonsillitis, then after recurrency goes into the induration and abscess formation. That is the psychosis to syphilitic tonsillitis, METONS 2. So when you get the chilly patient who is thirsty and having the inflamed tonsil at the right side, where the swallowing empty is aggravated, you get, think of the Baraita if other features are exactly matching. So the यहाँ पे tonsillar means glandular affection like a tonsil, the Baraita having the high affinity towards it. And the important feature in the tonsillitis is pain, throat pain, aggravated swallowing, empty. The remedies, other remedies are like lachesis, then Baraita, Baraita big, Baraita carb, Baraita sulf, right? Mentally, if you see the Baraita carb, the misplace is the core of the Baraita carb. Misplace, everything misplace. Inadaptable, can't able to adapt to the given circumstances, and the routinist wants the routine work. Change, can't tolerate. I have already explained in the previous session. Then the Baraita carb, if you see the miasmatically, if you do the miasmatic cleavage, the trimiasmatic matramidica, then you can see the psoric Baraita you see in the form of neat, clean, and perfect in the dress. Very interesting if you see. काफी बार ऐसे हुआ है ये past cases अगर मैं सोचूं तो there was a one child, girl child, who looks like a retarded, timid, shy, no eye to eye contact. When I asked to the child, she looks towards the mother, not able to answer. Mother answer कर रही थी या mother को बोल रही थी ऐसा है वैसा है, फिर mother answer कर रही थी क्वेश्चन, right? मतलब डेवलपमेंट रिटार्डेशन मेंटली, इवन द फिजिकली
लग रही थी कि वो थोड़ा बैकवर्ड है करके, मतलब फेशियल एक्सप्रेशन जा रहे थे. बट द इंटरेस्टिंग फीचर्स आई हैव सीन, हिज फेस एंड क्लॉथ्स आर नीट एंड क्लीन. मतलब समझ नहीं है उसको, पर उसके क्लॉथ नीट एंड क्लीन है. तो जब मदर को पूछा कि ये साफ सफाई में और बाकी कपड़े वगैरह नहीं, बोले इसको बहुत चाहिए. स्पेशली आईने के सामने तो काफी देर तक रहती है, दिन भर बार बार आईने में अपना चेहरा देखेंगी. और कॉस्मेटिक मतलब अच्छा दिखना चाहिए, फिर लिपस्टिक लगाना चाहिए, पाउडर लगाना चाहिए, उसके तरफ बहुत ध्यान रहता है. सो शी वॉज अ परफेक्ट नीट एंड क्लीन. दैट्स व्हाई वी कैन से द बराटा कार द कंसेंशियस मोर अबाउट द अपीयरेंस, कि मैं कैसे दिख रही हूँ, दो द पर्सन इज रिटार्डेड. So this is the peculiar symptoms you can see in the Baraita car, which is a soric, you can see. But when it is कि वह बार बार देख रही है, lot of time she invested in front of the mirror, then it could be a psychotic feature, turns to be a psychotic. Then if you see the psychosis, psychotic Baraita car, you get the slowness, which is the hallmark of the Baraita group and even the Baraita car. Slow grasping, slow, backward, mentally, physically, at all level, there is a slowness. Extreme shyness, पुअर आई टू आई कांटेक्ट, शाय. जब हम मराठी में बोलते हैं उसको एकदम लाजाळू. timid as a bhitra, but this is the shyness. So timidity and shyness both combined. Bashful, cowardice. Children hide behind the mother. Sometimes it is that अगर छोटा बच्चा है और क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई स्ट्रेंजर्स भी है या कोई गेस्ट आए है ना. एक तो स्ट्रेंजर के सामने आएगा नहीं अगर वराइटा चाइल्ड है घर में. तो अगर मदर ने या स्ट्रेंजर्स ने उसको बुलाया, मदर्स ने फोर्स किया, आएगा, पर क्वेश्चन पूछे या आएगा तो मदर के पीछे छुप जाएगा और ऐसे छुप के नजर से देखेगा. सो इट इज ऑलवेज यू कैन सी द क्लिंगिंग बिहेवियर एंड द हाइडिंग नेचर. The children's Baraita carp children never don't like to play, just stare. मतलब ऐसा होगा अगर बराटा चाइल्ड है तो बच्चे खेलते हैं या स्कूल में भी बच्चे खेल रहे, फ्रेंड्स खेल रहे हैं और बैठा है एक कोने में और देख रहा है, जस्ट स्टेयरिंग कि कैसे खेल रहे क्या. उसको वो एंथुजियाज्म या वो फास्टनेस या एक्टिवनेस या अलर्टनेस नहीं रहेगा कि हमको भी खेलना चाहिए. और खेलेगा तो अगर बाय चांस अगर किसी ने फोर्स किया खेले तो जो जजमेंट, डिसीजन और एक्टिवनेस वो खेल में चाहिए, यू कांट परफॉर्म दैट. दैट्स वाई जो बच्चे रहेंगे उसको बोलेंगे जाओ बैठ जाओ, या उसको ही लगेगा, दैट्स वाई उसको ही लगेगा कि मैं बराबर नहीं खेल रहा तो ये क्या बोलेंगे, ये हंसेंगे मेरे पे. दैट्स वाई देयर इज अ डिल्यूजन दैट लॉफिंग इन द बराटा कार्ब. Delusion, laughing, peoples are laughing, right? So there is always a lack of confidence, irresolution, that is in मतलब irresolution in act, in project about triples. तो ये इन रिजोल्यूशन कहीं पे भी, मतलब आप गाड़ी चला रहे हो तो दिखेगा, कुछ डिसीजन लेना है और डिसीजन नहीं ले पाएगा बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, because of the timid nature. There is always you can see indecisiveness, which is very marked in the Baraita. Indecisiveness, confusion of mind. Now you directly ask to the, in order to differentiate or ask to the person कि ऐसा कुछ है जहां पे आपको डिसीजन लेना पड़ रहा है, तो आप कैसा करेंगे, डिसीजन ले सकते हैं क्या. आप कपड़े लेने जाते हैं तो आपको कपड़े खरीदने हैं तो आप इजीली पिकअप कर पाते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि दूसरे के पे डिपेंड होते हैं, है कि नहीं. सो ऑलवेज यू कैन सी द इनडिसिसिवनेस इन द बराइटा. Abnormal concern over his appearance, tries to look perfect, neat, perfect in dress. This is also misplaced behavior in the Baraita. If you see the syphilitic picture of the Baraita carve, you get the childish behavior in the adult or old age. Huh? If you see the child and you pick up the childish behavior, then it is irrelevant. है ना.
So when you see the adult or old age, and if you observe the childish behavior, then you can think of Baraita. Thoughtless behavior, the behavior without the judgments and thought कि क्या करना है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में. इनएप्ट, इनएप्ट बिहेवियर जिसको बोलेंगे, पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कैसे सर्कमस्टांस में बिहेव करना चाहिए, दे डोंट अंडरस्टैंड और डोंट नो. स्लो डिलेड डेवलपमेंट, सिनाइलिटी अर्ली, सिनाइलिटी अर्ली, मतलब बोलता है ना कि बात 30-40 है पर सिनाइलिटी मतलब एज से, स्किन से, बालों से, सब जगह से, एक्टिविटी से ऐसा लगता है कि ये बंदा या बंदी बूढ़ी हो गई है करके. His or her age is 35 and she behave, looks, all the characters showing like she or he is of age 50. तो ये भी मिसप्लेस एज अगर ऐसे भी दिखा आपको तो भी आप सोच सकते हैं बराइटा. दैट्स व्हाई देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर द इनडिस्क्रिशन. इनडिस्क्रिशन सिफिलिस में आता है. देन स्माइलिंग अलोन वेन, only the Baraita carp is there or Baraita group is there. Smiling alone when, मतलब अगर मम्मी बोलती है डॉक्टर साहब ये अकेले रहता है तो ऐसे स्माइल कर रहे, कुछ बात नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं करता है, अकेले में ही हंसता है, अकेले में ही स्माइल करता है. So this foolish behavior, the Baraita is very important rubric in the Baraita, that is the smiling alone when. Then there is important rubric childishness in the old people. When the old people behaves like a child, childish behavior in the old people, then think of this remedy because this is the hallmark symptoms of the Baraita group and especially the Baraita car. Another remedy here for in this rubric is the sulfur. Again, there is a delusion walking knees on. That delusion legs cut off. Delusion legs cut off. बराबर है. इसका एक्सप्लेनेशन काफी अच्छे से एक्सप्लेनेशन सर ने भी दिया था, मैंने डिस्क्राइब किया है. एट द एंड वी कैन सी और वी कैन सी नाउ टू आल्सो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिल्यूजन लेग्स कट ऑफ और डिल्यूजन walking knees on. Somehow these rubrics having the similar understanding. Let us see. See how I interpret this rubric because this is very important. If you see such a rubric, इसमें few remedies है and most important is the Baraita group remedy and the most important is the Baraita carb. So how I interpret this delusion legs cut off? When the patient say मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, I am not capable, I am not doing, I can't able to do this and this, he is fixed in his notion कि मैं ये कर ही नहीं सकता, मैं ये कर ही नहीं सकता. Then think of this legs like a cut off, मतलब मैं चल नहीं सकता, मैं प्रोग्रेस नहीं. legs, what legs indicate? Legs indicate the walking. For what function? Walking. Walking means progress, आगे बढ़ना है. तो ये आगे ही नहीं बढ़ सकता, वो एक ही जगह पे स्टैग्नेंट रहेगा बिकॉज देर इज अ डिल्यूजन कि मेरे तो पैर ही नहीं है. दैट मीन्स आई कांट डू दैट. देर इज अ फिक्स नोशन, फिक्स थॉट, राइट. Again, the Baraita, another important rubric, the clinging is the important rubric in the Baraita. बराबर है. clinging, clinging to mother, clinging to person or furniture, this rubric. Now this clinging means dependent on that, right? They don't act individually, they have to depends on someone. बराबर है कि नहीं? मतलब ऐसे है कि उसका सर नहीं है, मतलब यूजिंग द अदर पर्सन हेड. ऐसा भी एक रूब्रिक है जहां पे वो खुद का दिमाग कुछ नहीं लगा सकता है, जो पर्सन दूसरा बोल रहा है बस उसको ह करेंगे और उसी के आधार पर सब डिसीजन लेगा, खुद का कुछ डिसीजन नहीं है. देयर इज, ये भी रूब्रिक है.
So there is a I feel like a crippled and cannot make any decision. This statement can be translated into delusion. He walks on in knees or his legs are cut off. And another rubric is the delusion criticize. Then we have delusion criticize, which is fixed idea that is not at all typical of above mentioned. Even if you have delusion criticize, right? So this is classically seen. You can see in the Baraita carb, right? Baraita cannot live and love on its own due to his indecisive nature, right? Insecurity is very marked in the Baraita because there is no confidence in oneself. That's why there is a clinging. That's why there is a, you can see the clinging nature in the Baraita. You can see the indecisiveness. Indecisiveness is also because of the lack of confidence. He is convinced that he will never be able to do the things he desired of him. Hence, he wants other to carry him. This is the behavior where we can interpret as a carried desire to be or delusion, legs cut off, clinging to mother, clinging to person or furniture. All these rubrics are comes because of this. Innate जो nature है वो क्या है? Insecurity, indecisiveness, timidity, right? So we see the rubric delusion walking knees on, delusion legs cut off, है ना? Another important rubric is the delusion body parts erroneous ideas as to state of his body parts. मतलब इसको रिलेटेड टू बॉडी, एक पर्सन था जिसको ये डिल्यूजन था कि मेरा चेहरा छोटा है, नाक बड़ा है, मैं कैसे दिख रहा हूँ। अपने बॉडी पार्ट्स के प्रति एक एबनॉर्मल फीलिंग आती है कि ऐसा ही है, मेरे उंगली छोटी है या मैं बहुत ही छोटा दिख रहा हूँ, बच्चे लड़के बड़े दिख रहे हैं। देयर वाज अ केस of some psychiatric elements where the person that boy feel कि मेरी जो ये है मतलब जो बॉडी बॉडी पोस्चर है या बॉडी है ना, बॉडी फिजिकल मेकअप है, काफी मैं ऐसा दुबला पतला एकदम श्रिंक दिखता हूँ जैसे बाकी लोग दिख रहे हैं, है ना, वजन नहीं बढ़ रहा है, एकदम एकदम बारीक लीन थिन दिखता हूँ, है ना। सो दो अगर आप देखेंगे उसका वजन उसका फिजिकल मेकअप इट इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट ही इज नॉट मैचिंग एग्जैक्टली व्हाट ही इज टेलिंग टू अस, राइट। तो यू कैन सी दिस द abnormal sensation about the body, abnormal sensation मतलब look, erroneous ideas of state of his body. The another remedy which is highly, जो दूसरा एक remedy है वो है sapodilla. Sapodilla having the same feature body parts, है ना, छोटा है बड़ा है, साइज लार्ज हो गई, स्मॉल है ना, नोज इज स्मॉल, नोज इज लार्ज टू द फेस, लाइक दैट। So this is the Baraita curve in short. We can't take everything. So I highlight the most important points. Keep in this mind so that you can pick up the Baraita curve in your clinic. Now the Baraita phos, how I differentiate the phosphorus element in the Baraita group, that you understand, so that you can differentiate कि Baraita तो आ रहा है, फिर phosphorus का भी consider करेंगे. So the Baraita phos is always chilly. You can see always thirsty. You can see the misplace in the Baraita phos. You can see the important phosphorus element symptom, that is the want of magnetism, want of love and affection. This is the from the phosphorus element. When Baraita and phosphorus element combine, तो Baraita के सब features तो रहेगा, पर phosphorus उसमें mix हो जाएगा, like a want of love, want of magnetism, want of affectionate. So यहाँ पे company desire, love, affection इसमें ये ज्यादा दिखेगा Baraita phos में. The affectionate nature of phosphorus is misplaced or even distorted, but not perverted. See, there is affection is there is a love is there is a sympathy is there, है ना, sympathetic for suffering of
human being, animals, like this. But here love and affection भी misplaced रहेगा. How we can identify or how we can understand this symptoms? तो ये है कि जैसे एक बंदा है कि उसको सिंपथी है, हैविंग इंटेंस सिंपथी, पर सिंपथी किससे है? सिंपथी किससे है? हो सकता है जो रेप्टाइल्स है, वर्म्स बोलते हैं, उसके प्रति है, कोई पर्टिकुलर बर्ड्स के प्रति है कि नहीं? फ्रॉग है, फ्रॉग के प्रति है तो उसके, या कोई ऐसे फ्लावर है या ट्री है उसके प्रति है, तो उसकी केयर करेगा, उसको ही समय देगा, उसमें केयर और वरी सब उसके ही प्रति रहेगा, लव एंड अफेक्शन. बट जो फैमिली मेंबर है, रिलेटिव्स है या बाकी ह्यूमन बींग है, बाकी लोग है, उसके प्रति कोई लव एंड अफेक्शन नहीं रहेगा. सो इट इज फिक्स टू द वन थिंग, whether it is animal, whether it is a reptiles, or whether it is a tree, like that, but not जो sympathetic है, जैसे phosphorus as a whole या carcinosin as a whole, which we called it as a sympathetic nature as a whole. तो sympathetic you can see in all level, पर यहाँ पे बराइटा डिस्प्लेस सिंपथी रहती है, सिंपैथेटिक रहता है, डिस्प्लेस लव एंड अफेक्शन रहता है. So you get the sympathy or love and affection toward this small and trivial thing, जिसको लोग उस पे ध्यान ही नहीं देते हैं, ऐसी चीजों के प्रति, ऐसे चीजों के प्रति, एंड नॉट टू अदर. तो डिजायर फॉर मैग्नेटिज्म एंड टच कैन बी फ्रॉम एनीवन, इवन फ्रॉम हिज अननोन पर्सन. सो इंटेलेक्ट भी नहीं है कि ये मतलब अननोन है, इससे कुछ हमको हानि हो सकती है. तो सो द पर्सन हु लविंग, टचिंग, केयरिंग, डिजायर फॉर मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म दैट मीन्स उसी के साथ में फ्लो में चले जाना है ना, मैग्नेटाइज होना, बराबर, इन्फ्लुएंस में आना है. सो दैट्स व्हाई देयर इज इजीली गेट इन्फ्लुएंस, सो दैट यू कैन से इम्प्रेशनेबल, easily get influence, easily clinging to person or to the children is a marked feature in the Pareto force. When there is a conflict that arises with the children, the lady goes into the depression and become easy victim of cancer that too left her. Yeah. See, the clinging to the person, clinging to the parents, clinging to the children. And when there is a conflict, when there is a Pareto force, agar lady hai, so children get away, there is a separation, there is a loss. Then the lady, because there is a clinging nature, when there is a loss, especially children, the left-sided is getting affected. If you see the Pareto force and that person left-sided, that means separation of loved one, loss of loved one, where the nutrition, जहाँ पे हम nutrition देते, breast indicate providing the nutrition. So child is getting suffered here, and the lady suffered with the left-sided breast cancer. See how we metaphorically understand the meaning of the disease. This is very important. तो Pareto force अगर है and clinging nature है lady में, and when there is a separation of loved ones, especially the children, then he might be or she might be suffered with the left-sided breast cancer, not right side. Right? Why not right side? If there is a right-sided breast cancer, which area you have to poke? Which area you have to search for? Anyone wants to answer? If there is a left-sided breast, right-sided breast cancer, when you see the left-sided breast cancer, you ask about the children. सर वर्क अफेक्टेड होगा राइट साइड में, या अपर लेवल के जो हस्बैंड हो या फादर है उनसे कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तब. और so always there is, if you see the right side, the बोलिए. हाँ, so one is the partner first, most important, because nutrition कहाँ दे रहे ना, है ना, हेड ऑफ द फैमिली हो सकता है, फादर हो सकता है, पार्टनर अगर मैरिड है तो, एंड देन हो सकता है देन बिजनेस एंड वर्क, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द ब्रेस्ट वेयर वी प्रोवाइड द न्यूट्रिशन एंड देयर इज अ लॉस एंड लव वन, है ना, लव वन जो क्लिंगिंग है, जो जिससे हम एकदम डिपेंड है
है ना, जो क्लोज है हमारे, जिसको हम कभी छोड़ते नहीं है ना, तो ऐसा, तो पार्टनर फॉर मेल इट इज पार्टनर, wife for wife it is the partner, husband you can consider it as, consider, right? This gives the immense and very mathematical understanding of the disease कि ये पर्सन में कैसे हुआ, है ना. So this is the hammer theory. This is also very important. We can take after a psychiatry जो सीरीज चल रहा है उस वो खत्म होने के बाद हम ले सकते हैं इसको, because this is very important. So you can see the then Barata phos, because there is a phosphorus element, you can see the sharp features like person is extroverted, they like the cold drinks, there is a fear of dark as seen in the phosphorus, fear of thunderstorm, desire for magnetism, and there is a bleeding or bleeder like a phosphorus, active bleeding, arterial bleeding or active bleeding you can see in the phosphorus. Then at the you can see such a features which is the belongs to a phosphorus element, right? Now see the Barata Muir. Barata Muir, आप देखते होंगे कि बराइटा काप हमारे प्रैक्टिस में बराइटा काप इजीली हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, पर ये जैसे बराइटा म्यूर हो गया, बराइटा म्यूर हो गया, बराइटा आर्स, बराइटा सल्फ लाइक दैट, ये हम थोड़ा सा रेयरली प्रिस्क्राइब करते हैं. पर अगर आप समझेंगे कि ये म्यूर में क्या होता है, म्यूर एलिमेंट में क्या होता है, बराइटा एलिमेंट में क्या होता है, और कंबाइन होने के बाद कौन सा पिक्चर बनता है, देन यू कैन इजीली पिक अप और अंडरस्टैंड द पेशेंट. सो बराइटा एलिमेंट में क्या है, शॉर्टनेस ऑफ स्टेचर, चाइल्डिशनेस, इनसिक्योरिटी, रूटीन वर्क, ऑर्थोडॉक्सिटी, ऑर्थोडॉक्स फिक्स टू द सर्टन, जो पहले से रूढ़ि परंपरावादी जिसको बोलते हैं कि पहले से जो परंपरा चल रही है उसके बाहर नहीं जाना, उसमें फिक्स होना. सो ऑर्थोडॉक्स इज अदर रेमेडीज also there like a Kali group or Kali carb, right? So orthodoxity you can see in the Baraita carb or Baraita group. But the muriatic element जब मिलता है, then mures define the sensitivity. Like natrium mure में muriaticum है, natrium mure highly sensitive, highly vulnerable. Introvertedness like a natrium mure, introvertedness, muriaticum element जब आता है तो person become introverted. Baraita में phosphorus element आता है तो Baraita phos become extroverted. But जहाँ muriaticum Baraita में आ रहा है, which leads to the Baraita mure, then Baraita mure, because of the mure element, it becomes very introverted, reserved person you can see in the Baraita mure. And at the same time, the person having the anxiety about the future, right? In the Baraita mure. The Baraita mure, you can see the hot mure elements आने के कारण hot है, thirsty है, slow to act and react है, introverted है. This Baraita mure. So introverted Baraita अगर आप सोचोगे तो Baraita mure you can think of introverted Baraita, which who is the hot and thirsty. Like, so when you see the people who have multiple lymphadenitis, because it has the high affinity towards the lymphatics or lymphatic system, and see there is a peculiar symptom, the lymph nodes appear like a series of knots. जैसे हम धागा है और उसके नॉट्स बांध रहे हैं तो कैसे सीरीज में दिखेंगे, वैसे ये सीरीज ऑफ नोट्स लिम्फेडिनोपैथी या लिम्फ नोट्स इनलार्ज होते हैं इन द सीरीज ऑफ नोट्स like a rope. This is seen and felt especially in the left side of the neck because muriaticum and Baraita mure, it is a left-sided drug. It is the left side of the neck or left side of the body when the hand is passed over it. These glands are firm and hard in consistency. People who complain of sudden electric shock like pain, people who have tendency to recurrence husky voice, hoarseness, easily prone for convulsion, and the most important in the Baraita mure, ये होना ही चाहिए. This is the hallmark I think because in the whole Baraita group यही remedy ऐसी है which having the high sexual desire,
which leads to even insanity and mania. That much high sexual desire which leads to insanity and mania. So insanity with predominant sexual desire you can see only in the Baraita Mur, in whole Baraita group. So always if you think of Baraita Mur, always always ask about the sexual function or sexual thoughts or sexual desire. Right? Now this sexual high sexual desire उसमें rubric है. That rubric कहाँ पे है rubric? हाँ कौन सा? हाँ आगे आएगा rubric, तब मैं उसमें एक एग्जांपल दूंगा. Right? तो पैथोलॉजिकली if you see the Soric, mostly the Baraita is psychotic. That's why there is a psychotic pathology Baraita Mur में ज्यादा होती है, psychotic pathology. So always there is a excess of synthesis of fibrin. Now fibrin क्या करता है? फाइब्रिन क्या है? हार्डनेस, फर्मनेस के लिए होता है. सो देर इज, बिकॉज देर इज एक्सेस ऑफ फाइब्रिन इन द Baraita Mur, the glands become hard. Always you can see hardness and firmness in the gland. It is not soft, it is always hard in the Baraita Mur. And the genetic defense used by the Baraita is the excess of fibrin. That's why there is a hardness, and deposition of fibrin leads to the hardness. The fragility within the tissue during SORA seems to be combined with reinforcement of fibrin compared to loosening and elastin depletion. And there is a depletion of elastin which causes the looseness of the parts, relaxation of the parts, because elastin क्या करता है? Elasticity दर्शाता है. तो if there is a elastin less, then there is a looseness or relaxation of the parts or organ. So all glands become hard in the Baraita Mur. That's why if you see there is a arteriosclerosis at as a general pathological condition in the Baraita Mur. What things means the arteriosclerosis, hardening of the artery. So because of the excess of fibrin, not elastin, excess of fibrin, there is a hardness of even glands, hardness of artery, hardness of blood vessel, leads to arteriosclerosis and the hypertension. Right? Try to understand, because we have to correlate the pathology with this person, pathology with the mind. So you can see even the hardness at the mental level. Tumor formation is in the major artery, giving rise to the aneurysm. So the pulsating tumor in abdomen, the remedy is Baraita Mur, aneurysm. So if you get the aneurysm, always see the other feature of Baraita group. So if you get the pathological finding as an aneurysm, and you get the other picture of Baraita mentally, physically, then there is a sure shot the patient is Baraita Mur. The Baraita can be go into the third defensive action like a syphilis, where there is a destruction you can see. So there could be in Baraita Mur, there could be a paralysis that leads to the destruction of mental control, and this causes the insanity and madness. And always if you see, even if the paralyzed person, you can see this insanity of Baraita Mur is always associated with increased sexual thoughts or increased sexual desire. Because this increase or high sexual desire you can see only in the Baraita Mur, in the whole Baraita group. Remember this. Another important feature physically, if you consider general feature, the icy coldness of body with the paralysis. In the paralyzed person, you can see the icy coldness of the body. This is the characteristic feature.
Now, if you see the psychotic Barata Muir, you see the nymphomania and satyriasis, excessive sexual desire in man, female, male, right? So satyriasis and the nymphomania. Then you can see the aneurysm, arteriosclerosis, paralysis, induration of the cardiac orifice with pain, right? Chronic hypertrophy of tonsil, tonsil become tremendously swelled, induration of glands like a knotted cords. All these are the belongs to a psychotic feature. And mentally, if you see the syphilitic, यहाँ पे syphilitic भी बहुत prominent है बराटा म्यूर में. Syphilis prominent है. तो answering confusely as if thinking of something else. Children in. When you ask, ऐसा लग रहा है कि कुछ और ही सोच रहा है. They become thinking something else. और जब हम पूछेंगे क्वेश्चन तो ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा कि उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज ही इज एनग्रॉस एब्सॉर्ब इन समथिंग एल्स. तो जहां पे रहना चाहिए वो नहीं रहे, वहां पे भी मिसप्लेस दिखता है. डॉक्टर के पास आया पर कुछ तो अलग ही दिमाग में सोच है, एनग्रॉस इन सम अदर थिंग, वो नहीं समझेगा. या इवन द नहीं ये करेंगे, डॉक्टर के पास आए कैसा रहना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए. इवन इफ you can see this in the adult. So that's why the another rubric characteristic which is similar to the legs cut off, that is legs missing. हमने इसको explain किया है. हाँ, now this is the important syphilitic rubric: mania, madness, sexual desire from, or high sexual desire or sexual desire suppression from mania, madness. So intense the sexual desire is that leads to the mania or insanity. So frank syphilitic this rubric is. If you understand it, if you see the Marathi movie, those people who belongs to the Marathi medium, they know this movie, that is the काकस्पर्श. काकस्पर्श देखा होगा किसी ने, ज्यांनी पण बघितलं काकस्पर्श. आय थिंक जसं कावळा मेल्यानंतर जसं पत्रा ठेवतात आणि कावळा येतो आणि ते खातो, तर म्हणतात की बा झालं, व्यवस्थित झालं. नाहीतर कावळ्यानी स्पर्श नाही केला आणि जर जेवण नाही केलं या त्याला टचही नाही केलं पत्राळाला, तर ते अशुभ मानले जाते. तर त्या दिस मूवीज ऑन दॅट बेसिस वेअर द हजबंड वॉज एक्सपायर्ड एट द टाइम कि जब उनका फर्स्ट नाइट रहता है, तो हस्बैंड वहीं पे बेड पे एक्सपायर या डेथ हो जाती है उसकी. सो हर सेक्सुअल डिजायर सो इंटेंस, अगर वो किसी को और को जो दूसरे आदमी है या और किसी का लव अफेक्शन देखते हैं, तो शी was goes in the condition where she becomes maniac और पागल हो गई, goes into the insanity because of the high sexual desire or unsatisfied sexual desire. The another remedy for this is the Apis mellificum, Tarantula phosphorus, and one of the most important remedy, which is the foremark, is the Baraita mur. That's why when you any कोई भी पैथोलॉजी हो, पैरालिसिस हो, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज हो, lymphatic complaints हो, always see the sexuality. Always ask high sexual desire. So this is the very important as far as the muriaticum or Baraita mur is confined. Right? So now see the Baraita sulf. Here the Baraita sulf is most predominantly a psychotic, belongs to a psychotic miasm. The Baraita sulf, you see the hot, very thirsty, and the extroverted. This is one of the extroverted Baraita. Another extroverted Baraita is the Baraita false, but Baraita false is chilly, thirsty. ये hot और thirsty है. यहाँ पे इलास्टिन लेस है, वहां पे एक्सेस ऑफ फाइब्रिन था लास्ट बराइटा म्यूर में. यहाँ पे देर इज अ लैक ऑफ इलास्टिन. अभी इलास्टिन क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोड्यूस करता है, इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करता है. सो व्हेन देर इज अ लैक ऑफ इलास्टिन, इलास्टिन synthesize less,
which is the genetic feature of the Baryta sulf. This less of elastin leads to the lack of elasticity and looseness, and this lack of elasticity and looseness you can see everywhere, that is on at the level of physically and at the level of mentally. So less elasticity in the mind leads to the less elasticity at the mental level, less elasticity at the physical level because of the lack of elastin in the gene, right? So when there is a less elastin, flexibility, elasticity, there is the loss of will. There is no will to do anything, no will to do doing things, new things. It is yielding remedy. This is highly yielding remedy. That's why it makes him more timid, extremely timid. And this timidity gives rise to the more anxiety and suspiciousness in the Baryta sulf. So desire more than she needs. This is the sulfur. Desire more than she needs. Another remedy is the arsenic. मतलब जितना लगता है, आप बच्चों को भी देखेंगे, बड़ों को भी लगते हैं, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा लेना वो समझ नहीं पाता। कुछ है तो ग्रीडी होते हैं, जैसे आर्सेनिक ग्रीडी होता है, ग्रीडी, बाद में मिलेगा कि नहीं, एक्यूमुलेट कर लो, कलेक्ट कर लो। सो कलेक्शन, बिकॉज ऑफ दैट ग्रीडीनेस, है ना, कि बाद में मिलेगा नहीं, पेट ऐसे भूखा रहेगा तो खाली पेट रहना पड़ेगा, सब ले लेंगे। तो ये जब हम शादी में जाते हैं ना, उस हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चों में, बड़ों में, ग्रीडीनेस। एंड आप देखेंगे इट इज नॉट इन Baryta sulf, इट इज नॉट आउट ऑफ ग्रीडीनेस, बट बिकॉज उसको समझता ही नहीं है कि कितना खाना है और कितना लेना है करके, दैट कैलकुलेशन एंड मैथमेटिक्स ही नहीं समझता है इन Baryta sulf. That's why there is a desire more than she needs. और वी कैन से कि वो एक्यूमुलेट करती है, एक्यूमुलेट, और थाली में बहुत लेंगी, खाएंगी कुछ नहीं, उसको समझेगा नहीं कि हमको कितना खाना है, वो कैलकुलेशन ही नहीं समझेगा। सो देर इज अ फियर ऑफ कन्वर्सन, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल लेवल है, मतलब बड़े हैं, अडल्सेंस है या अडल्ट है, एकदम चाइल्ड है तो हम उसको नहीं कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे। Word hunting or forgetfulness. Forgetfulness is so marked in the Baryta sulf. Always while talking, hunt for the word. Miss, मतलब forget. While speaking, word just disappear from the mind. क्यों रिकॉल ही नहीं कर पाता वो वर्ड्स को, याद ही नहीं आता वर्ड्स. This causes a fear of conversation in these people, because there is a fear of forgetfulness or fear of losing the words, fear of missing the words. मतलब ये वर्ड्स ही याद नहीं आ रहे, जब वो किसी के साथ भी कन्वर्सेशन करता है तो पर्टिकुलर वर्ड्स भूल जाता है while conversation. तो slowly there the fear develop, fear of conversation, and that's why, and because of the timid nature, he tries to avoid the people, tries to avoid the conversation. So physically if you see, because of the less elasticity, क्या होता है, Baryta sulf always suffered with the back pain, or there is a weakness of back like a Kalikar, a chronic back problem or lumbago because of the relaxed muscle of the back, you can see in the Baryta sulf. And the characteristic of the Baryta sulf backache is aggravated by sitting erect or standing erect. Erect, because erect requires the firmness, elasticity, and because there is a lack of elasticity, because there is a less elastin, the condition or backache gets aggravated by sitting erect or standing erect. This erect is aggravation, because there is a sulfur element भी है, तो standing aggravation भी रहेगा, stoop shoulder or standing aggravation. And as soon as the patient erect अगर रहेगा तो तकलीफ होंगी, अगर ऐसे रिलैक्स रहता है, रिलैक्स सिटिंग, रिलैक्स अगर खड़ा है, स्टैंडिंग, तो पेशेंट फील्स बेटर. So relaxation is also important feature in the Baryta. Then the iode element. Then you can see, is it clear up till now? Now come to the, I think this is the last remedy, Baryta iode. Here the iodine element is more, you can see. And अगर iodine element अगर ज्यादा है तो कौन से features predominant रहेंगे, कौन से नहीं रहेंगे, that you have to
assess. This baryta iode is hot, thirsty, plus there is hastiness and there is a extrovertedness, and also you can see the restlessness. Not slow और एकदम शांत रहेगा ऐसे नहीं, यहाँ पे restlessness दिखेगा. There is a hastiness because of the impatience. The baryta iode, because iode is highly impatient. आपको ये समझना पड़ेगा कि आयोडम में कौन से फीचर्स है. तो आयोडम को पढ़ना भी बहुत जरूरी है. अगर बाराटा आयोड पढ़ना है तो आयोडम में क्या है. आयोडम में you can see the loquacious, that's why there is a extrovertedness. There is a, you can see impulsiveness, impatience, hurry. See psoriasyphilitic, ये आयोडम. Restlessness, impatience, hurry, and the hyperactive child. So even if you see the baryta iodum, see the hastiness and extrovertedness. The memory is sharp. बाकी इसमें मेमोरी कैसे डल होती है, इसमें मेमोरी somehow sharp होती है and is sensitive baryta. ये sensitive है. It is sensitive to external impression. This is the only baryta who likes to dream and go into the fantasy. Baryta iode. Baryta carb भी fancies absorb in, fancies exaltation. Baryta carb is the remedy. Baryta iode नहीं है, but sir by विजयकर सर की स्टडी है, उसमें उन्होंने देखा कि baryta iode is also absorb in the fancies. So baryta likes to dream and go into the fantasy. Unlike other baryta, it is not slow, it is fast. है ना? It is, this baryta iode is fast, hurried and restless and impatience. Like the other baryta, other remedy like Tarantula argentum sulfuric acid. The iodine element is very fast and furious in action and temper. Baryta iode having the fast speech. Even when you take the case, see or observe the speech of the patient, whether it is a slow, whether it is a fast, whether it is a hurried, whether he or she requires some time or space before answering, how is the talk, कैसे है, speech कैसा है, dictatorial है, all these we have to observe. So baryta iode has very fasty speech. It is difficult to understand the speech. मतलब स्पीच इतना हास्ती रहेगा कि सामने वालों को समझेगा नहीं. वो सामने वाला पूछेगा कि फिर से बताओ, या फिर हमको बोलना पड़ेगा अगर बाराटा आयोड आए तो धीरे धीरे बोलो ताकि मैं लिख सकूं, ताकि मैं समझ सकूं. तो सी द बाराटा आयोड स्पीच इज ऑलवेज हास्टी, then it is difficult to understand speech on one shot. We need to ask him again. There are the other remedies also in the Matra Medica who having the hasty speech. कौन से remedies है? Like a Hiparsulf having the hasty speech. Hyoscyamus, Lachesis, Mercury. Sulfuric acid भी है, sulfur भी है, right? So how we differentiate this hasty speech? The Hiparsulfs talk fast when he is in anger and wax. In the angry, because the Hiparsulf is very angry, abusive, impulsive, impetuous, है ना? तो Hiparsulf talk fastly or fast in a anger or vex. Hyoscyamus talk hastily when happy, when cheerful, and when cracking the jokes. See the fine differentiation. Lachesis talk fast, ये डिक्टेटोरियल होता है, डोमिनेटिंग होता है, उसको ही वो पूरे ग्रुप को डोमिनेट करना है, तो स्पीच बिकम हास्टी एंड फास्ट. वो दूसरे को चांस ही नहीं देता है कि दूसरा बोलना चाहिए, बिकॉज ऑफ द लोक्वासिटी. उसकी जो बातें हैं उसने ही करना चाहिए, वो अपना ही फॉर्मनेस या डोमिनेशन दिखाना है, उसको डिक्टेटोरियलशिप दिखाना है, अपनी प्रेजेंस को मजबूत करना है. दैट्स व्हाई ये जो लोक्वासिटी होती है, हियर द स्पीच बिकम और टॉक बिकम हास्टी इन द लैकेसिस, राइट? मर्क्यूरी का टॉक इज फास्ट टू असर्ट इट्स सुप्रीमेसी, आई एम द सुप्रीम. Pyrogen talks high or fast or hasty
in the high fever. In high fever. That's why there is a rubric loquacity fever during. The remedy is podophyllum and pyrogen. Loquacity fever during. Even if you see the patient, whether it is a child or adult, who talk fast or who talk much, that is the loquacity. अगर आप ऐसे पूछोगे that loquacity, it is not the delirium. You can take it as also delirium, but delirium is a different thing. इट इज द लोक्वेसिटी, मतलब आप बोलोगे कि ये डॉक्टर साहब ये बात ज्यादा ऐसे तो इतनी बात नहीं करती, ये बुखार आए तो बहुत बड़बड़ बड़बड़ करती है, इधर की बात बताएंगी उधर की बात बताएंगी. Think of the podophyllum and the lachesis as the remedy. Sorry, podophyllum, lachesis, and even I think the pyrogen is there. Loquacity, fever during. Lachesis way. Lachesis is also talk fastly in fever due to fever to keep up with the rapidity of thoughts in the brain. सेपिया भी हास्टी स्पीच है, सेपिया में हरिड स्पीच है. विद देयर इज अ मूवमेंट्स ऑफ हैंड एंड जेस्चर्स. हैंड के जेस्चर ज्यादा दिखाएंगे आप सेपिया में. ये ऑब्जर्वेशनल सिम्टम बहुत मार्क है कि सेपिया लेडी जब भी बात करेंगे या झगड़ा करेंगे तो हाथ के जेस्चर्स काफी एक्टिव रहेंगे. ऐसा करेंगी, हाथ के जेस्चर्स जेस्चर्स बहुत प्रोमिनेंट दिखेंगे. हाथ बाकी समय अगर दूसरे रेमेडी देखेंगे तो हाथ शांत रहेगा, स्टिल रहेगा, साइलेंट रहेगा, पर यहाँ पे एक्टिव हाथ रहेगा, मुंह रहेगा और हैंड्स रहेंगे. सो हैंड जेस्चर्स भी इंपॉर्टेंट है सेपिया में. लाइक राइट. सो बराटा आयोड, इफ यू सी द बराटा आयोड चिल्ड्रन, चबी होता है, उसके चिक्स तो और फेस तो चबी होंगे, बट उसके जो बॉडी है वो लीन थिन रहेंगी, क्योंकि बराटा आयोडम ये जो है इवेस्टिगेशन काफी मार्क है आयोडम. सो व्हेन यू सी द बराटा आयोड यू कैन गेट द chubby cheeks but thin body, restless body, fast body, non tiring body, मतलब थकेंगे नहीं, मतलब काम करते हैं, like a फ्लोरिक एसिड. These children who come with the inflamed tonsils so many times every month and every they finally get enlarged and indurated. मतलब सोरा से कैसे साइकोसिस जाता है, देखो इन्फ्लेमेशन रिकरेंट हो रहा है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन, दैट इज द सोरा. अभी ये क्रोनिक इंडुरेटेड टॉन्सिल में कन्वर्ट हो गया, दैट इज द साइकोसिस. Baraita iode always or Baraita children always have the excess of appetite or ravenous hunger. और आयोडम का स्पेशलिटी है कि वो खाना भी खाएगा तो फास्ट खाएगा, हस्ती ईटिंग. सो दैट्स व्हाई द बराटा आयोड में भी आपको ये दिखेगा कि हस्ती ईटिंग, हरिड ईटिंग और ईटिंग हरिडली. Children who play in the group but can never become the leader, they are just a follower. पीछे 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 रहेगा, लीड नहीं करेगा कभी. Intellectual of Baraita iode is an exception to dull intellectual status of Baraita. वे शार्प मेमोरी रहेंगी iode की, can score very well in the academic, school and college, but fail miserably where there is a strict smartness is required. मतलब पढ़ाई करेगा एक पर्टिकुलर, पर जहां पे अलग कुछ है, अलग कुछ दिखाना है, करना है, हटके करना है, वहां पे स्मार्टनेस, एक्स्ट्रा स्मार्टनेस जो बोलते हैं हम, वो नहीं कर पाएगा. सिफिलिटिक बराटा कैसे रहेगा, बराटा आयो. At a times mind goes beyond the realm of reality to dream and fantasy. He goes into the fantasy. They may get absorbed in fancies. The only Baraita who also goes to the level of exalted fancy is the Baraita Kara. So fancies absorbed in or exaltation of fancies, the remedies are Baraita Kar, Baraita. As far as the Baraita is concerned, बाकी तो और remedies काफी है. Fancies absorbed in fancies, exaltation of fancies. This is syphilitic rubric. बराबर है कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल कैसे बोलेंगे, फैंसीज, दिस इज द इमेजिनेशन. देयर वाज वन एग्जाम्पल, देयर वाज अ केस वेयर द प्रफुल्ल विजयकर सर हैज गिवन द बराइटा, शायद बराइटा ही दिया था. सो उन्होंने उस समय वो ये रूब्रिक लिया था, फैंसीज एक्सल्टेशन ऑफ या फैंसीज एब्सॉर्बिंग, जहां पे बच्चा था, he liked the car, different types of cars and like to drive the car. अभी डायरेक्ट कार में तो नहीं बैठ सकता ना, तो वो कारें चलाता था, जो खेलने वाली कारें रहती है ना,
है ना, खेलने वाली कारें, वो डिमांड करता था कि ये कार चाहिए, ऐसी कार चाहिए। और वो कार को ऐसा, जैसे हम कार चलाते हैं तो हम बचपन में देखते हैं ना, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं हम, ऐसे। तो ही एनग्रॉस इन दैट कार चलाना, एनग्रॉस इन दैट, एब्सॉर्ब इन दैट, कि कार, बस ऐसा लगता है कार ही चला रहा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप कार, लग्जरियस कार, कार चला रहा है। So this is the fancies, this is imagination. So the child absorb in fancies or fancies absorbing. So that rubric has taken up that time respect to this behavior of the child, which is the syphilitic in nature, right? Now when we rule out the Baraita, अगर ये नहीं है तो आप Baraita मत सोचो. So try to understand this. When to rule out the Baraita group? When the person has ability for quick adaptability, जहां पे adaptation quick होगा और easy होगा, क्योंकि बराइटा होल ग्रुप में adaptability difficult होती है, adaptation ही नहीं कर पाता at a given circumstances, new places, new area, है ना। person can come up with the good ideas, creativity और artistic अगर होगा ज्यादा, good ideas उसके mind में अच्छे अच्छे आते होंगे, तो don't think of बराइटा। पर्सन हु इज प्रिकॉशियस, प्रिकॉशियस मतलब जो उम्र है उससे पहले वो सेंस डेवलप होना, प्रिकॉशियस चाइल्ड, फॉस्फोरस, प्रिकॉशियस चाइल्ड, कार्सिनोसिन, मर्क्सोल। तो जैसे बच्चा 3 साल का है पर पेरेंट्स बोलते हैं ना, ये ऐसे बिहेव करता है, ऐसे हमको एडवाइस देता है, ऐसे इसका रहन सहन है, जैसे ये कोई बड़ा आदमी है, ये एडवाइस भी हमको देगा, ये बिहेवियर, इसका रहन सहन, खाना पीना, सोचना, ये इट इज लाइक अडोलसेंस और अडल्ट, बड़े 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 की तरह है, जैसे बड़ा पर्सन है। दिस इज द प्रिकॉसिटी, द पर्सन कैन यूज द न्यू with ease, cannot be Baraita. Person answering quite intelligently cannot be a Baraita. So the diseases of frankly destructive nature, that is syphilitic in nature, without elements of psychosis, rule out the Baraita. जो फ्रैंक सिफिलिस है, डिस्ट्रक्टिव नेचर का डिसीज है, विदाउट गोइंग थ्रू द साइकोसिस, साइकोसिस है प्रीडोमिनेंट है और फिर सिफिलिटिक में जा रहा है, दैट इज ओके। और सिफिलिटिक प्रीडोमिनेंट है और साइकोसिस कुछ नहीं है एलिमेंट बैकग्राउंड में, देन डोंट थिंक ऑफ बराइटा, डोंट थिंक ऑफ। तो पैरालिसिस है, बट यू कैन गेट द हिस्ट्री ऑफ हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, साइकोसिस भर भर के दिखेगा। सिफिलिस है पैरालिसिस पर, साइकोसिस हाइपरटेंशन दिखेगा, हार्डनिंग दिखेगा, लिपिड लेवल बढ़ा हुआ दिखेगा, ऑल साइकोटिक फीचर इज देयर in the background, right? So this is the different elements of Baraita group. So we have seen how to differentiate finely on the peculiar symptoms of each element, like a Baraita car, Baraita horse, Baraita cell, Baraita mule, like that. Right? So I think, I hope you understood this session very well, even the previous session, so that you can pick up or you can understand the Baraita personality or Baraita patient. And you are now in a position to differentiate the different elements of the Baraita. Again, if you have any queries regarding this Baraita group, you can ask. So there is this conflict study is very important. This narrow our case taking, this narrow our time, this short our time, this understanding when we have the conflict, Hammer's conflict, metaphorically when we correlate the disease to the emotion, to the psychology, then we have the definite picture, cause effect relationship in our hand. So the understanding becomes very quick and easy. Right? So always in each and every case, always see the conflict, always see the
मेटाफोरिकल रिलेशनशिप कि अगर ये लंग्स अफेक्ट हुआ है, किडनी अफेक्ट हुई है, ओवरी अफेक्ट हुई है, यूटेरस अफेक्ट हुआ है, तो व्हाट कुड बी द conflict behind it, right? So it's a 4:30. आज 1 hours का ही लेना था पर become 1.5 hour. So hope you enjoy the session. If you have any query, you can ask. So in the next or next to next, we can again we will take the psychiatric elements or psychiatric disease condition, right? So thank you very much for your listening. Cyber crime where person is, there is a question, sir. Cyber crime where person is made a fearful, telling that there are into problem though they have not done, but they believe. How though? This is not misplaced. Misplaced, yeah, this is the or intellectually be high person, but this get trapped or confused because of the overwhelmed emotion, because there is a feeling of crime. यहाँ पे उसको उसको पता है कि मैंने कुछ गलत किया है और ये मुझे ट्रैप कर रहा है, बराबर है। तो ये कमिश्नर का फोन आएगा, आईटी वालों का, इनकम टैक्स वालों का, और बोलेंगे आपने ऐसा किया, आपने ये धोखाधड़ी की है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द फियरफुलनेस, बिकॉज कि देर इज अ फियर दैट समथिंग, कुछ तो हमने गलत किया है, तो ये एक्सपोज होगा। तो यहाँ पे इमेज कॉन्शियसनेस एंड कंसेंशियसनेस मतलब इमेज कॉन्शियसनेस ज्यादा आएगा कि मैं अगर इनको नहीं दूंगा तो ये एक्सपोज कर देंगे या ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो दिस नॉट अ डेफिनेटली नॉट अ मिसप्लेस, right? So thank you very much.